So good morning, students. So here in the second sum we continue with the second sum. During the medical checkup of 35 students of the class, their weights were recorded as follows: less than 38, less than 40, less than 42, less than 42, 44, 46, 48, 50, like this. And you see here frequency is continuously increasing. It means this table there is no need to draw to convert it into cumulative frequency table. It is already cumulative frequency table. You have to simply draw the graph because already it is less than type cumulative frequency table. Then he said, hence calculate the median weight from the graph and verify the result by using the formula. तो ग्राफ से आपने मीडियन निकालना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ से मीडियन निकालना है, देन यू हैव टू वेरीफाई आल्सो. तो वी विल डायरेक्टली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. So it starts from 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, then 52. Right? Then frequency is maximum 35. तो 5 का डिफरेंस दे दो. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, like this. This is CF. As I already discussed here, upper limits are always represented on x-axis and cumulative frequency is always represented on y-axis. So we will plot the point 38, 0, 40, 3. This is approximately 3. So 40, 3, 42, 5, 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32, 52, 35, 52, 35. So you join them with free hand. So this is how the graph will be drawn, right? 38 के corresponding 0, 40 के corresponding 3, 42 के corresponding 5, 44 के corresponding 9, 46 के corresponding 15, 14, 48 के corresponding 28, 50 के corresponding 32 और 52 के corresponding 35. मैंने तो अंदाजे से ड्रॉ किया, आप लोग एग्जैक्ट ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे देन द results will be different. Now you have to calculate median graphically from it. So that is n by 2th term. 35 by 2, that is 17.5th term. तो यहाँ से 17.5 यहाँ आएगा लगभग, ये आ गया, नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो. सो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 46.5 आंसर आएगा, 46.5 आएगा. सो सिंपल इन दिस सम already table is converted into cumulative frequency distribution table because less than लिखा हुआ और ये frequency increase हो रही है. I already told you in last exercise also. So upper limits draw किया x axis पे और CF draw किया y axis पे and then we plotted the points and joined the points. मीडियन निकालने के लिए n by 2 किया, 35 by 2 17.5 आया. यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ की 17.5 से यहाँ से 90 डिग्री पे, तो अप्रॉक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 46.5.
अब आपने इसके अंदर यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आल्सो। तो सबसे पहले आप इसको ग्राफ में इसको टेबल में कन्वर्ट करो। सो दिस इज 38, तो फर्स्ट यू राइट इट 38 to 40, 38 to 40 आएगा 3। So now I can rub it from here. So you have to, this is verification, we are doing verification with the help of formula. So here it is 38 to 40, class interval, here frequency. 38 to 40, 0 3 में से 0 गए 3, 40 to 42, 5 में से 3 गए 2, 42 to 44, 9 में से 5 गए 4, 44 से 46, 14 में से 9 गए 5, 46 to 48, 14, 48 to 50, 4, 50 to 52, it comes up to be 3, so total is 35. So you have to calculate 38 to 40, 3, 40 to 42, 2, 42 to 44, 9, 4, 44 to 46, 5, 46 to 48, 14, 48 to 50, 4, 50 to 52, 3. So this is how you can filter out the table from it. Now you have to calculate CF by using table. So CF you calculate 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 4, 14, 5, 14, 14 plus 14, 28, 28 plus 4, 32, 32 plus 3, 35. So 3 का 3 आ गया, 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 14, 28, 28 plus 4, 32, 32 plus 3, 35. Now you have to calculate median out of this. So median n by 2th term होता है, so that is 35 by 2, 17.5th term. इससे बड़े वाला CF ये रहा, so it means L is 46, H is 2, this is F, this is CF, पीछे वाला लेते हैं ना CF पिछले क्लास इंटरवल का, F is 14, CF is 14, then H is 2, then n by 2, that is 17.5. So median has formula L plus n by 2 minus CF upon F into H. So L here is 46, n by 2 here is 17.5, CF here is 14, F here is 14, H here is 2, so 7 आ गया, 46 plus 3.5 over 7, cutting होगी, so it comes out to be 46.5. So this is how it verifies our solution graphically. Graphically भी यही था और by solution by formula भी यही आया, ठीक है। तो पहले वही मीडियन निकालने का देयर आर, सो यू ऑलरेडी नो द मेथड। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14 plus 14 28, 28 plus 4 32, 32 plus 3 35। देन उसका हाफ कर दिया, n/2 आया, यहाँ से इससे बड़े वाला CF देख लो, डेट इज 28। तो मीडियन लाइज इन द क्लास इंटरवल 46 to 48। L 46 आ गया, H 2 आ गया, F 14 आ गया, CF 14 आ गया। तो देन यू अप्लाई द फॉर्मूला L plus n/2 minus CF upon F into H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 46.5 आया। Hence it verifies our solution graphically. Thank you.